Person A has the same credit card as person B. Same bank, same card, same 30,000 monthly spending. Person A ने earn किए 10,200 last year by just using the card smartly. And person B ने pay किए 78,000 in interest on a debt that started at 50,000. Same card but completely different outcome. So what was the difference? One choice, made every single month. Credit cards in India are growing at insane speed. 20.4 lakh crore in transaction in 2024 alone. Over 11 crore cards in circulation. That's a big amount. And here's what nobody tells you at the same time. Credit card default also jumped 6,742 crore in December 2024. A 28% jump in just 1 year. That's also a huge amount. Same product, creating millionaires and creating debt traps simultaneously. आज मैं आपको वो एक डिसीजन दिखाऊंगा जो पर्सन ए और पर्सन बी को अलग करता है. But before I do that, I need to show you what's actually happening inside that minimum due button that banks conveniently put on your statement. I went through RBI's official data, payment system reports, and actual credit card math to build this. सब verified. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. Picture this. Priya is 27, working in Bangalore. She got her first credit card, HDFC Millennium. She was very excited. She buys a laptop worth 50,000. Can't pay the full bill this month. No problem. Bank कहता है just pay 2,500 minimum. So Priya 2,500 rupees pay करती. Feels fine, right? She's paying. She's not defaulting. Here's what actually happened. That remaining amount 47,500. बैंक ने उस पे interest charge करना start कर दी. 3.5% per month. Month number 1, 47,500 multiplied by 3.5%. 1,662 interest added. New balance 49,162. She paid 2,500 rupees. Still owes more than she started. Month number 2, same thing. 1,620 interest added on the new balance. And by month 6, she has paid 15,000 in minimum payments. But still, her outstanding balance shows 47,000 plus amount. Wait a minute. Think about this. क्या हो रहा है? 15,000 rupees pay कर दी, but अभी भी उतना ही बाकी है जितना शुरू में बाकी था. And this is what we call minimum payment trap. And banks को पता है कि this is their most profitable product. Credit card interest in India is around 2.5% to 4% per month. That's 30% to 48% per year. Now compare that to your FD जो 7% का रिटर्न दे रही है. Nifty 50 historical average 13% per year. And credit card debt growing at 36% to 48% per year. So credit card debt is not just expensive, it grows faster than any investment you can make. Every single month you carry that balance. Your debt compounds faster than your wealth can grow. पहले के टाइम में गांव में साहूकार होता था, वो 40% 50% के इंटरेस्ट पे लोन देता था गांव वालों को और लोग उस चक्कर में फंस जाते थे. क्रेडिट कार्ड कंपनीज द डिजिटल साहूकार, लीगल, कन्वीनियंट, इन योर पॉकेट, जो आपसे हंस हंस के बात करते हैं और आपको क्रेडिट कार्ड लोन्स बेचते हैं. एक्सेप्ट देयर इंटरेस्ट कैन टच 48% पर ईयर. दैट साहूकार वुड बी जेलस कि मैं भी तो सेम चीज करता था, ये लोग मुझे बुरा क्यों मानते थे. तो ये थी पर्सन बी की स्टोरी. प्रिया ट्रैप में गिर गई. बट वेट, अब मैं आपको पर्सन ए के बारे में बताता हूँ, क्योंकि वो भी सेम कार्ड यूज करता है बट उसका एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट. एंड ये डिफरेंस सिर्फ एक हैबिट की वजह से. नाउ मीट अर्जुन. सेम सिटी बैंगलोर, सेम एज. उसके पास भी HDFC मिलेनिया कार्ड है. सेम 30,000 मंथली स्पेंडिंग. ग्रोसरीज 10,000, फ्यूल 5,000, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल्स, डाइनिंग 15,000. Arjun uses the card for all of it, but he has one rule, that every single month he'll pay the full bill, not minimum full amount, by the due date. That's it. That's the entire strategy. Let's calculate what Arjun actually earned. So HDFC Millennia 5% देता है Amazon Flipkart purchases पे. So 5% on 5,000 online eligible spends 250 rupees and 1% on remaining 25,000 250 rupees. So monthly cashback बना 500 rupees and annual cashback बना 6,000 rupees. Plus fuel surcharge waiver on 5,000 fuel spent. 50 rupees per month. That means 600 rupees per year. So Arjun's annual benefit बना 6,600 to 10,200 depending on the spending mix. That's real money, not points, not air miles. Actual cashback जो उसके account में credit हुआ. And because Arjun has been using and paying his card consistently for 2 years, his CIBIL score is now 780 plus. That means जब वो home loan के लिए apply करेगा, तो that score could get him 0.25 to 0.5% lower interest rate. On a 50 lakh home loan, that saves him 1.5 to 3 lakh rupees over 20 years. So are you person A or person B? Here's the honest test. Condition number 1, do you pay your full bill every month, not minimum, full amount? Condition number 2, do you not buy things on credit card that you can't afford with your actual savings? Condition number 3, do you track your monthly spending even roughly? If all 3 is yes, you're person A. Credit card is your tool. And if even 1 is no, you are in dangerous territory. अगर ये honest breakdown अच्छा लगा तो वीडियो को like कर देना. It genuinely
actually helps more people see this. अब आपको पता है दोनों साइड्स का मैथ, but there is something I haven't told you yet. वो एक चीज जो बैंक्स deliberately confusing बनाता है, ये वो hidden trap है जिसमें most people, even the smart ones, fall in. Tell me if this sounds familiar. Bill comes 25,000. You think I'll pay 20,000 this month? That's 80%. That's responsible. So आप 20,000 pay करते हो and remaining 5,000 rolled over. Now most people think कि interest 5,000 पे लगेगा. नहीं, गलत, completely wrong. When you make a partial payment, even 99% payment, banks apply interest on the entire 25,000 from day one of the billing cycle. सिर्फ उस 5,000 पे नहीं जो आपने पे नहीं की, the full 25,000 from the first transaction date. This is called the interest-free period revocation. It's in the fine print. Most people never read it. ये बात सुन के गुस्सा आता है क्योंकि ये deliberately confusing है. Banks want you to think a partial payment is fine. Banks profit most from exactly the people who think they are being responsible with minimum or partial payments. Is that really fair? Because हमें ये चीजें कोई नहीं बताता, ना गवर्नमेंट ना क्रेडिट कार्ड कंपनीज. कमेंट करो. I really want to know what you think about this. So here is the complete picture now. Credit cards are not really good or bad. They are powerful tools. And powerful tools destroy you when you don't know how to use them. वो एक स्पाइडरमैन का कोट है. With great power comes great responsibility. So credit card भी same. So person B didn't fail because she was irresponsible. She failed because nobody taught her the interest-free period rule. Nobody showed her the partial payment trap. Nobody explained that minimum due is a bank's invitation to pay 42% annual interest indefinitely. It's a financial education gap जो हम यहाँ पे fill करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो या यूज करना चाहते हो तो ये 3 स्मार्ट रूल्स जो आपको कभी पर्सन बी बनने नहीं देगा. रूल नंबर 1, नेवर एवर पे पार्शियल और मिनिमम, फुल बिल एवरी मंथ. सेट एन ऑटो डेबिट फॉर द फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन योर बैंक ऐप, नॉट मिनिमम, फुल. आज ही करो. दिस वन हैबिट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सन ए एंड पर्सन बी. रूल नंबर 2, चूज योर कार्ड बेस्ड ऑन वेयर यू एक्चुअली स्पेंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंस्टाग्राम एड्स और फ्रेंड्स रिकमेंडेशन. अपनी लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चेक करो. वेयर डू यू स्पेंड द मोस्ट? ग्रोसरीज, पिक अ कार्ड विद ग्रोसरी कैशबैक. अगर आप ट्रैवल बहुत करते हो कार से तो फ्यूल कार्ड बाय करो. अगर ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हो तो Amazon पे, ICICI और फ्लिपकार्ट एक्सेस. मैच योर कार्ड अपने बिहेवियर से. जो कार्ड किसी और के लिए बेनिफिशियल रहा है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी अच्छा होगा. डोंट रश टू बाय एनी कार्ड. डू योर रिसर्च फर्स्ट. मैं एक फ्यूचर वीडियो में स्पेसिफिक कार्ड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करूंगा. बट अभी के लिए गूगल द टॉप रेटेड कार्ड्स फॉर योर स्पेंडिंग कैटेगरी एंड चेक पैसा बाजार और कार्ड इनसाइडर फॉर वेरीफाइड करंट ऑफर्स. रूल नंबर 3, if you're already in debt, stop using the card immediately. कोई नया परचेज नहीं, कार्ड बंद रखो. Take whatever you can pay beyond minimum, even 2,000 extra per month and apply it. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस डेट ट्रैप से बाहर निकलो. सब्सक्राइब करो अगर आपको पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट पे ऐसे ही और वीडियोस चाहिए. एवरी वीक ऑन सैटरडे. सो सेम कार्ड पे पर्सन ए ने 10,200 अर्न की और पर्सन बी ने 78,000 का इंटरेस्ट पे की. द गैप isn't about income, it isn't about intelligence, it's about one piece of information nobody gave person B. Now वो information आप जानते हो and now it's up to you कि आपको कौन सा person बनना है. But here is something interesting. The same trap that catches people with credit cards, it work in a completely different disguise when you buy on no cost EMI. मैंने 50,000 के परचेस में 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए थे without even realizing it. And RBI ने बजाज फाइनेंस को बैन भी किया था इसी वजह से. The hidden charges, the GST on interest, the lost cashback, वो पूरी स्टोरी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी.